तो शुभ संध्या पिले वेलकम टू MatSciOdia आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलो थिबो। सो समस्ते जानिछ कि ए क्लास रे आमे कोन करबा आ जो क्वेश्चंस थिला रिसेंटली क्रैश कोर्स रे हमर जहा टेस्ट हेतिला से क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। क्लियर। सो एमती क्वेश्चन आसिले आमे एग्जाम रे केमती अटेम्प्ट करबा। ओके जा फल कोन हबो जो माने भी आई डोंट नो खाता पर्यंत चेक हेनी कि का परफॉर्मेंस देछि बट थ्रू आउट दिस डिस्कशन तुम मैंने जानवे जे क्वेश्चन को आमे केमती अटेम्प्ट करबा आमे केमती लिखिबा। क्लियर। सो दैट एग्जामिनर को किए जे खाता चेक करथो ताको अट्रैक्टिव लागबो तुम मानको राइटिंग। क्लियर। ओके सो सेक्शन वाइज आमे जीवा एंड समस्त को रिक्वेस्ट ओके मो क्वेश्चंस पढिबी देन तार फॉलोइंग आंसर तुमे माने दबो आफ्टर दैट मु देबी। ओके सो गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन इज a database management system DBMS is used to what? So tell me which answer, which option is correct among all those four. এই চারটা ভিতর কোনটা ঠিক? A DBMS is used to what? Design websites, manage data in databases, edit images, or control hardware. কোড হবে কো? Quick. Option A, B, C, D. Which one is correct? No response yet. Okay. The answer is option B. Okay, option B. Manage data in databases. Clear? बहुत easy question थिला. The next question. Which command is used to permanently save changes in SQL? तो एटा कोन हबो को पिले? कहा को यूज करी हमें परमानेंट चेंजेस करू SQL रे? रोल बैक, सेव पॉइंट, कमिट और अपडेट. कोन हबो आंसर? हाँ सी कमिट. ओके तो मत एबे कह among those four ओके तो छाड़ रोल बैक, सेव पॉइंट एंड कमिट ये को टाइप रो कमांड हमर जो SQL फोर टाइप्स रो कमांड्स अछि को टाइप रो कमांड लैंग्वेज ओ सॉरी को टाइप रो लैंग्वेज SQL जो हमर वेराइटीज अछि ओके DDL DML वगैरह तो ये तीनटा कहा को बिलोंग्स करू छ. अच्छा कमिट टा को टाइप सीधा क्वेश्चन. Let's see who gave the first answer. Commit command को टाइप रो SQL command. No idea. कहाँ पे आंसर जाना है? Commit is TCL, which stands for transaction control language. हम पढ़ी छे. Okay. Then the next question. A foreign key is used to dash. को foreign key use करी कौन करिया? Foreign बोली जिया मैं कौन करिया? Option A, uniquely identify a row. Option B, remove duplicate rows. Option C, link to tables. Or option D, sort records.
Okay, Ganesh. Yes, Ganesh gives the first answer A. Oh, sorry, C. Okay, option 3A. No. Okay, C is the correct answer. Okay, कौन भाई ना फॉरेन की को यूज करके हम कौन कर दीटा टेबल को लिंक करू फॉर द एग्जांपल गोटे स्टूडेंट अछि स्टूडेंट एटा मार्क हमें कौन करू ना एठी गोटे मार्क आईडी कौन करू गोटे फॉरेन की ऐड करू ना गोटे फील्ड नो ओके हाँ फॉरेन की ही ऐड करू ओके जोटा कि मार्क रो अच्छा मार्क रो जो प्राइमरी की रहला सेटा कौन करे एटा को रेफर करे ओके मार्क रो प्राइमरी की एठी की रेफर करे कोडा स्टूडेंट टेबल जोटा मार्क आईडी थिबो ओके तो फॉरेन की है कि एटा आछि कोडू फॉरेन की आछि ना मार्क रो मार्क आईडी रो एडू ओके एटी कोन हला दुईटा टेबल रो लिंक ही हला तो ऑप्शन कोन होबो लिंक टू टेबल्स व्हिच एसक्यूएल क्लॉज ग्रुप records फॉर एग्रीगेशन को कोटा को यूज करले हमर एसक्यूएल रो जो क्वेश्चंस थाए सॉरी डाटा थाए से कोन हुए ग्रुप हुए ओके सिमिलर टाइप ऑफ जो सब डाटा रहउची ताको गोटे गोटे ग्रुप करा again Ganesh you are doing so well okay answer is group B ताले ऑर्डर बाय कोन करबो ऑर्डर बाय रे कोन करबा ना हमें सॉर्टिंग करबा ऑर्डर बाय के यूज करी हमें सॉर्टिंग करबा ओके बाय इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ओके टू वेज रे हमें सॉर्टिंग करबा ऑर्डर बाय को यूज करी ग्रुप बाय को हमें जानले कोन करबा रिकॉर्ड को ग्रुप करबा रे डिस्टिंक्ट कोन करे पिला डिस्टिंक्ट कोन करबो ना सिलेक्ट यूनिक एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट्स ओके डुप्लीकेट एलिमेंट को से इग्नोर करबा देन हैविंग कोन करबा चेक कंडीशन among मल्टीपल डाटा where हमें गोटे डाटा सहित चेक करू बट एठी हमें कोन करिया मल्टीपल डाटा सहित हैविंग रे चेक करिया मल्टीपल डाटा ओके ओम जस्ट फॉलो द क्रैश कोर्स दैट्स इनफ किसी टेंशन नहीं एटी जा पढ़ाउची तापर फोकस करो ओके सब किछ हो टेंशन नहीं ओके नेक्स्ट एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इंश्योर्स एटा को एटॉमिसिटी रो काम को ओके को एटॉमिसिटी रो काम को फास्टर ट्रांजैक्शन ऑल ऑपरेशंस ऑफ अ transaction must be complete or not back of data duplicate value or removed yes option B एटॉमिसिटी माने कोन कहउची ना हमर जो ट्रांजैक्शन माने हमर कोन थेला ना मल्टीपल स्टेटमेंट मिसी की गोटे काम को करते ओके तो सेठी कह गला जदी मल्टीपल स्टेटमेंट रू बा क्वेरी रू गोटे भी क्वेरी फेल मारला ताले हमर होल ट्रांजैक्शन फेल सेटा थिला हमर कोन एटॉमिसिटी तो एबे को एसिड प्रॉपर्टी ए सी आई डी एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी एडा में जानि गले कोन all operation of a transaction must complete or not then what stand for C consistency consistency मते के कहि परियो consistency माने कोन what the meaning of consistency here एटी consistency माने होउची हमर ट्रांजैक्शन पूर्वरु एवं ट्रांजैक्शन परे डाटा प्रॉपर रहबा दरकार क्लियर डाटा कोन रहबा दरकार प्रॉपर्ली गोटे अकाउंट रे 5000 अछि ट्रांजैक्शन आगुरु जदी 1000 जाउची देन 4000 होबा दरकार नोजे ट्रांजैक्शन परे सी 5000 रहबो ओके and the next is isolation कौन करे पिला isolation 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 होची कोन ना हमरा गोटे डाटाबेस रे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होता है तो ईच ट्रांजैक्शन जेमते अलग अलग रहबो को गोटे ट्रांजैक्शन आउट ट्रांजैक्शन सहित इंटरप्ट करबो नाही ओके कथा लगे मु तुमको पैसा पठौथिबी से पैसाटा तुमको न जाई आउ काकू पाकू पळेबो सेगुडा हबो
ओके मु तुमको जो ट्रांजेक्शन पठाउछु करछु माने सेटा फर्स्ट होबा देन जो कथा ओके तापर फिले ड्यूरेबिलिटी डी फॉर ड्यूरेबिलिटी ओके ड्यूरेबिलिटी रो माने कोन फिले ड्यूरेबिलिटी होउची ना हमर वांस डाटा कमिट हे जीवो ओके वांस आमे कोन करबा डाटा को कमिट कर दबा सेटा परमानेंट से डाटा रहबो ओके केबे भी चेंज हेबो ना क्लियर ओके बहुत ही बढ़िया वी शुड मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हाट इज अ डेटाबेस को के कहबा व्हाट इज डेटाबेस डेटाबेस कौन फिले yes database is the collection of interrelated data okay खेती करबा बट क्वेश्चन अछि 2 to 3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स कोन लिखबा त डेफिनेशन रहला देन एग्जांपल यूज करबा ओके वर्तमान हमें कौन कौन को डेटाबेस सब यूज करूचे ओके among that there is a important one which is rdbms जोटा कि हमें हम सिलेबस रे फॉलो करू एग्जांपल एतिक लिखि दबा बेस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ प्राइमरी की व्हाट इज अ प्राइमरी की व्हाट इज प्राइमरी की a uniquely identifier in a table okay जे कौन करे always uniquely identify करे each table को and primary key can't be null okay clear can't be null केबे भी null हबो नहीं okay then okay after that कौन करबा ना तुम माने गोटे एग्जांपल दे दो suppose we have a table student okay where roll number uh, we declared roll number as a primary key why because every student having unique roll numbers okay and roll number can't be null roll number कार फांका रहबनी and जार भी रहबो सब डाटा अलग अलग okay तो एट मो माइंड with a question आसी then what is the difference between primary key primary key primary key and unique key unique unique key तो ये भी यूनिक अच्छी एथरे भी यूनिक देन दुईटा भीतर डिफरेंस कौन पिले गोटे की लाइन मन रख एटा नल एथरे हमर प्राइमरी की रे हम नल रखि परिबानी इट कैन बी नल इट कैन हैव नल वैल्यू टोटल यूनिक रे ओके बट प्राइमरी की रे हम रखि परिबा नाही ओके नीड टू रिमेंबर देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रोल बैक कमांड पिले रोल बैक कमांड कौन करबा के कहबा रोल बैक को हमें कौन पय यूज करू और द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल बैक कमांड कौन हम रोल बैक ना रोल बैक को यूज करी वी कैन रिवर्ट अ ट्रांजैक्शन ओके रिवर्ट अ रिवर्ट अ ट्रांजैक्शन रिवर्ट अ ट्रांजैक्शन गोटे ट्रांजैक्शन को रो पुराना अवस्था को हमें फेरे नै परबा रोल बैक को यूज करी फॉर द एग्जांपल हम दे दबा ट्रांजैक्शन दु तीन टा स्टेप है छी ओके हम जानला जे जोटा स्टेटमेंट लिखा है 2 नंबर लाइन ने जोटा कि हम सेव पॉइंट वगैरह हमें दऊ भी सेठी इश्यूज है जी देन हमें कोन करबा रोल बैक टू चेक पॉइंट जोटा सेव पॉइंट देइतबा ओके जेमि सेव पॉइंट 1 एटा गोटे लाइन क्वेरी सेव पॉइंट 2 एटा गोटे लाइन क्वेरी अप टू 10 हे गलेनी ओके हां एई जगह हमें अछि सेव पॉइंट 10 तो एठी देखले जे हमर एठी इश्यूज अछि तो हमें कोन करबा एठी कोन लिखबा रोल बैक टू 2 s2 सेव पॉइंट 2 तो कौन करिवो एई जगह को से नै जो डायरेक्ट तो आ पूर्वरु आ भीतर जा भी सब ऑपरेशन हेतिबो से सब रिवर्ट हे जिवो ता पूर्व अवस्था को पळेबो क्लियर
that is rollback. Then define acid properties. No need to explain again. ମୁଁ ହେଇ just ହିଁ କହିଦେଲି acid, so much important. Then what is distinct in SQL ପିଲେ? Distinct ଗୋଟେ constant ରେ ଯାଉଛି. Okay, first distinct is a SQL constant. Constant କଣ ନା ଯୋଉଟାକୁ ୟୁଜ କରି ଆମେ conditions ଦଉ. Okay, SQL constant. ତାପରେ distinct କି ୟୁଜ କରି କଣ କରୁ? We can select only different value or unique value whether our table have what multiple duplicate value. Pile don't go with the handwriting. Okay, in the formalities ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ. Okay, ହେଲା ତ ଆମ ଟେବୁଲରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଇକି ବି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ୟୁନିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ. ଓକେ, ନାଇଁ ରିମୁଭ୍ କରିବନି. ରିମୁଭ୍ କେମିତି କରିବ? ଆମ ଟେବୁଲରୁ ଥୋଡ଼ି ଆମର ଡାଟା ସବୁ ପଳେଇଲା, ରହିବ ନା. ଆମକୁ ଖାଲି ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖେଇବାର ଅଛି. ଓକେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଜ କଲା ପରେ ଆମ ଟେବୁଲରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଉଡ଼ିଯିବନି କୁଆଡ଼େ, ସିଏ ରହିବ. ଓକେ, let's go to the next. At the last session, ନାଇଁ ଗଣେଶ ରିମୁଭ୍ କରିବନି, ସିଲେକ୍ଟ କରିବ. ଓକେ, ରିମୁଭ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି ନା. ରିମୁଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସିଲେକ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଆମ ଟେବୁଲରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ ସିଏ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ କଟିଯିବ. ରିମୁଭ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ. ଓକେ, ବଟ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଥୋଡ଼ି ସେ କାମ କରେ. ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଖାଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ. ଓକେ, ଖାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ, ଶୋ କରିବ. ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍. ବଟ୍ ଯାହା ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲେ ସେଟା ରହିବ ଅଲରେଡି. ଓକେ, देखो ଆସିଲା explain acid properties of a transaction with examples. ओके, बहुत ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାର ଅଛି. what is A, what is C, what is I, what is D. ସରିଲା ପରେ then completely ଗୋଟେ transaction create କରିବାର ଅଛି. ଓକେ, ଏତେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ. ଦେଖ A for atomicity definition ଲେଖିବ. definition ତାପରେ ଗୋଟେ example ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମର SQL query ଥିବ. SQL query ଥିବ. ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू एंड कमिट पर्यंत स्टार्ट ट्रांजैक्शन एंड कमिट सेटा हला एटॉमिसिटी रे पड़ो. देन कंसिस्टेंसी रे एग्जांपल हमें को लिखिया पड़ो. केमती ना सपोज ना ए यूजर को पैसा गला. ओके, से क्वेरी लिखिया पड़ो. लिखला परे आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन बैलेंस एति किथिला, देन आफ्टर द ट्रांजैक्शन बैलेंस एति गला, नथिंग एल्स. आइसोलेशन भी सेमती. ओके, एग्जांपल लिखिबा मल्टीपल ट्रांजैक्शन can be performed at a single time. So isolation makes sure no transaction will interrupt each other. Okay, सेमती durability. First definition लिखिवा. Example ले कौन? Once we get committed the transaction, all the saved data is safe for permanent. Okay, गोटा whole transaction कौन करियो पिले एमती करियो. एमती आसिले ए को लिखिबो, बी को लिख ए सी आई डी सब लिखि दबो. लिखला परे गोटे एग्जांपल सेक्शन देई ओके, गोटे स्टार्ट ट्रांजैक्शन करिकी स्टार्ट ट्रांजैक्शन करी से पॉइंट रोल बैक सब यूज करबो. लास्ट को कमिट कर दबो. गोटे अकाउंट रो आउट अकाउंट रो पैसा जाउथबो. एति क्वेरी लिखिबार अछि. सो सिंपल. सेटा भी मु तो मानको देई देथिली कोड. ओके, क्वेरी देथिली. लास्ट को गोटे गोटे लाइन करी कोन ने फॉर दिस एबव एग्जांपल्स या होची हमर ऑटोमेटिक ए काम करूची, ए काम करूची, एटा करी की बेस करी लिखि दबो काम से आ कुछ करबा दरकार. ओके, the second next thing, explain commit rollback set point. इजी किछ ना एथरे कमिट रो काम कोन, रोलबैक काम कोन. जदी जे एटा जे लिखि पारुची तमे एडा किछ न, हमको बस खाली स्टार्टिंग रू कोन करियार अछि, टीसीएल रू स्टार्ट करियार अछि. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज which is used to perform transactions in SQL. Okay, then
It is having multiple commands, just like command, roll commit, rollback, save point. कौन commit करे गोटे लाइन और दी लाइन रोलबैक रो काम कौन रहबा से पॉइंट रो काम कौन रहबा देन विथ एग्जांपल ले सेम जिंस चिपकेबार अछि किछि दरकार नै एवळे एग्जांपल जो ट्रांजिशन स्टार्ट होतो कमिट टू एंड होतो सेडी रोलबैक थिबो से पॉइंट थिबो दैट्स ओके एंड हमें गोटे गोटे एग्जांपल ले एमाने सब केमति केमति काम करछन्ती ओके तार गोटे गोटे कोन लिखिबार अछि गोटे गोटे लाइन लिखिबार अछि हियर इफ in say point 2 there is any data corruption happen then we throughout the what rollback command we can revert the transaction and we can go to or jump to the say point 2 okay then again correct the value and our data will be fine okay then to mind story create kori lekha se koribar अछि once તમે এটা লিখিদেଲ এক্সাম্পলটা লিখিদেଲ দেন তাକୁ ଦେଖି ଯାହା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ବି ପସିବଲ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ତାକୁ ଗାରେଯିବ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ explain group by and aggregate functions with examples ଦେଖ ତ ଏଇଠି ପିଲେ କଣ ହବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି aggregate ଓକେ ଦେଖ group by function ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ group by function is aggregate function clear group by function is aggregate function ता माने group by को लिखिबा आगुरु हमको aggregate कौन लिखियो पड़े ओके तो फर्स्ट हम aggregate function लिखिबा तो there's some predefined function used to do what okay which take multiple inputs and give one output or used to do some kind of mathematical operation or logical operation जेन तर mean max वगैरह एतिकी aggregate रो लिखिला परे तादर example लिखिबा okay examples of aggregate functions are mean max average okay जहाँ सब इतला से सब लिखिबा लिखि साला परे then heading दबा group by okay group by को एक्सप्लेन करिबा अछि कोन करे ना टेक अच्छा एक इट ग्रुप मल्टीपल data as per the values same values whose containing same values in a single column गोटे कॉलम रे कोन करे ना जो सब डाटा रहउजी सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को ची कोन करे गोटे ग्रुप करे ओके बस एते गला देन सरला परे हमें एसक्यूएल केमति यूज करू सेठी कोन करबो ना गोटे एग्जांपल नै जिवो टेबल नै जिवो ओके टेबल एति गोटे गोटे डाटा अछि एचआर वगैरह एचआर डेवलपर एमति दी डाटा दे दे की से लिखि दबो जेतले हमें ग्रुप बाय क्लॉज हमें रन करू सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ओके ग्रुप बाय एम्प्लॉय एति लिखि दबो तो से कोन करबो ना जेतिको ग्रुप अछि ओके माने कोन हमें कोन लिखबा देखो select department from emp group by डिपार्टमेंट ये कौन करियो पिले ना हमर जो टेबल रहला तार जा सब डिपार्टमेंट अछि डिपार्टमेंट डाटा को देखियो सपोज एटा हला डिपार्टमेंट कॉलम एटा ओके एचआर डेवलपर एचआर डेवलपर टेस्टर से कौन करियो ना एठी ना देखियो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा कोटा एचआर गोटे पैटर्न सेम डीबी पैटर्न सेम ये गोटे अलगा तो से कौन करियो एचआर गोटे टेस्टर गोटे डेवलपर गोटे तीनटा ग्रुप करियो ओके एटा तार काम दैट्स इजी ओके तुम मानको जेमते सुइटेबल लागुची सेमते एग्जांपल ओके एंड मन रख पिले आईटीज माने पेपर माने एग्जांपल दवाटा मस्ट ओके कारण हमें थियोरेटिकली किसी जिंस ऊपर डील करने ओके हमको सब प्रैक्टिकली ही इम्प्लीमेंट करा पड़े ओके जेते हम एग्जांपल दबा एग्जामिनर को लागिबा जे खाता से करतो हां पिलेटा थरो अछि ओके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली केमती जिंस काम करछि से जिंस पिलाटा जानि क्लियर जोटा कि तुम कॉपी की बहुत अट्रैक्टिव बनेबा सो दैट भलो मार्क भी आसे ओके एंड मु तुम मन खाता चेक करे देन मु देखिबि जे तुम माने कोइ जिंसटा भी मिस करू ओके आ कोन चेंज करबा को पड़ो इंप्रूव करबा पड़ो तुम राइटिंग स्किल और राइटिंग स्टाइल ओके सेटा तुम मन खाता देखला परे मु कहि देबी ओके भाई आई होप all of you clear how to answer the questions okay
हाँ एग्जांपल वार्डिंग दे देले बेटर हो ओके माने कोन आमे गोटे एग्जांपल दे देले एग्जांपल कोन है जे फ्रॉम द अबव एग्जांपल हमको जिंस हम काम करछ बस दैट्स इट आ कुछ करबा जहां हमें कोड क्वेरी लिखिबा से जिंस को हमें टिके इंग्लिश रे एक्सप्लेन करबा आ कुछ दरकार नहीं ओके so I hope you all of you enjoy this class guys we will meet in the next class okay till then